Welcome back. My name is Manish Katiyar. I am from Access College, Kanpur. Now, we will move to second unit number 5 and second part, which is IT Act 2000. It is one of the most interesting act, and before we proceed with this act, we should know why there is a requirement to study this IT Act. Basically, when uh, in year 99 2000 there was a different era, that is called IT era. There was certain revolutionary changes in various fields like accounting fields, service fields, in banking sector, in healthcare sector. Everywhere the involvement of software technology was prominent. So government felt that we must form a IT Act to recognize the transactions, to provide the legal legality, to provide the legality of the transaction done through the electronic modes, online modes. Earlier this act was not in operation. Majority of the transaction was done through offline modes. So as the industry was changing and government created a different law, IT laws. So there now almost a decade has been passed after introduction of these IT laws. Here we will discuss about very basic terms and importance and necessity of IT Act, where this IT Act applies and where this IT Act does not applies. In your syllabus, they have asked majority of the definitions of the IT Act and digital signatures and penalties. This is given in your syllabus, and now I will cover each topic of your syllabus through this class. Okay. Information Technology Act, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप. ये आईटी एक्ट जो बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है और ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है. प्लीज़ बी वेरी स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर while understanding these IT Act's rules. Number 1, IT Act is an act to provide legal recognition. Again I am repeating, the IT Act is an act. IT Act means Information Technology Act is an act to provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication. Okay. Commonly referred to as a electronic commerce, to facilitate electronic filing of documents with government agencies. Like in our life, we submit our ITR through electronic mode. Traces is a website developed by the income tax department by which we submit our income tax return. We have to submit various GST returns periodically through online modes. We have to in Companies Act, we have to submit majority of the documents through online mode at the portal of MCA 21. So whenever you file or submit a document with these authorities or this portal, whether these document which you have submitted is legal or not.
earlier whenever we submit a document with the authorities, we have to sign. This is basic requirement to sign a document. Under Evidence Act, if you sign a document, that means you have understood what is written or mentioned in that particular document. In the same way, whenever you submit a document through electronic medium, you have to sign your document in a digital mode, that is called electronic signature or digital signature, to authenticate that particular document. Okay. So, commonly referred to electronic commerce to facilitate electronic filing of document with government agencies. Objective था. अब now I am covering each objective very point to point basis. Number 1, to grant legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange or electronic commerce in place of paper based method of communication. To give legal recognition to electronic signature for authentication of any information, to facilitate electronic filing of document with the department, to facilitate electronic storage of data, to provide legal sanction to transfer fund electronically to and between banks and financial institutions, to provide legal recognition for keeping books of accounts in electronic format by a banker, to amend the Indian Penal Code, Indian Evidence Act 1872, Bankers Book Evidence Act 1991 and RBI Act 1934, to provide legal infrastructure to promote e-commerce and secure information system, to manage crimes at national and international level by enforcing laws. All these objectives I have highlighted or written in the bold letter so that you can understand the importance of the IT Act. Now, scope, where this IT Act apply or does not apply, we will discuss this topic under scope of IT Act. The Information Technology Act shall extend to whole of India. This act shall not apply on the followings. इस चीज़ को बड़ा केयरफुली देखना है. Point number A, a negotiable instrument as defined in section 13 of NI Act, check bills and promissory note के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. A negotiable instrument act as defined section 13, this IT Act does not apply. Power of attorney, this IT Act does not apply. Suppose you can't say that my grandfather has written an email and in that email he has provided me a power of attorney. It is not possible. Please be very specific or clear. ऐसा नहीं कि आप कहें कि मेरे दादाजी ने मुझे मेल के थ्रू विल बना के दिया, नहीं, IT Act उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. A trust defined in section 3 of the Indian Trust Act, इनकम टैक्स एक्ट में डिस्कस करेंगे. ट्रस्ट क्या होता है? बेसिकली ट्रस्ट इज फेथ, और उस फेथ पे कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है तो उसके लिए बात कर रहे हैं कि IT एक्ट उसके ऊपर कवर नहीं होता है. नेक्स्ट है अ विल डिफाइंड 2H ऑफ सक्सेशन एक्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड में विल नहीं बना सकते हैं. नेक्स्ट है मतलब विल को आपको अपने टाइप रिटन हैंड रिटन होगा, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और प्रॉपर उस विल को आपको अथॉरिटीज़ के पास सबमिट करना पड़ेगा और उसको एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी. एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल और कन्वेंस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी, हालांकि स्टैम्प पेपर तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में अवेलेबल हो गए हैं, आपको प्रिंट आउट के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन मोड में ट्रांसफ़र कर दें उसको. ठीक. नेक्स्ट है
any such classes of document or transaction as may be notified by the central government. कह रहे हैं इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट को ऐसे क्लासीफाई कर दे कि ये आईटी एक्ट में कवर नहीं होगा तो उसके ऊपर आईटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कोप को हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है. नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर. फर्स्ट डेफिनेशन, डिजिटल सिग्नेचर. डिजिटल सिग्नेचर मीन्स, व्हाट डज दिस डिजिटल सिग्नेचर? देखिए, अर्लियर वी यूज टू साइन अ डॉक्यूमेंट, that document used to be in a paper format. We simply take a pen and sign on that particular document, but this is not possible in digital format. Suppose you have written an email and you want to forward that email to your immediate boss. Can you sign this email through pen? No, it is not possible. आप पेन की हेल्प से डॉक्यूमेंट को साइन नहीं कर सकते हैं. So they have provided a alternate mechanism to authenticate. The word is authenticate. To authenticate a document, that is called digital signature. Digital signature is nothing. It is simply a password or which is issued by the NSDL or CDSL. You submit your documents with these authorities. They issue a digital signature in the pen drive format. Whenever you require to submit a digitally signed document, you simply put that pen drive in laptop or computer, and that document very easily access these digital signature from your pen drive or any other mode by which these digital signature is saved. We will discuss about the digital signature. There are three types of digital signature: type 1, type 2 and type 3. We will discuss it. So, what is digital signature? Digital signature means authentication of any electronic records by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provisions of section 3. Now, the word is subscriber. Subscriber is a person who has obtained digital signature from the certifying authorities. Certifying authorities who? Certifying authorities are the authorities who issue digital signature to you. This we have discussed about DIN and SIN, यानी कि company identification number and director identification number in company laws. Whenever a director is appointed in a company, he must obtain his DIN, director identification number. Along with DIN, he must have his digital signatures also. How he will submit his company's annual returns document with the ROCs. Without digital signature, document can be submitted, but these documents are not authenticated. So, the subscriber is a person who has obtained digital signatures from the certifying authorities. A digital signature is a mathematically generated code. I am just describing what is digital signature. The digital signature is a mathematically generated code that validate the authenticity of the software, messages or digital files. It uses encryption techniques that are secure enough to be considered legal and binding in some countries. It guarantees that the file has not been altered during transmission, providing a layer of security against cyber threats and attack. Each word is very clear, self-explanatory, you can very easily understand it. So, let us move to our next definition, that is electronic governance. In your unit number 5 IT Act, they have covered various definitions. Now, we are moving to forward another definition, that is electronic governance. The Act contains the following provisions to facilitate e-governance. ई-गवर्नेंस का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें हो रही हैं इनको गवर्न करने के लिए ई-गवर्नेंस की बात हो रही है. लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स,
जो भी आपने रिकॉर्ड्स, आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, वेदर इट इज़ योर बैंक स्टेटमेंट, your any other documents. Let us take an example. Suppose you receive a monthly statement from in your email ID from your banker. Now, as you all are aware that SBI has started a new practice to send their customers bank statement in their email ID, and if there are certain students who might be aware that if you are dealing in the stock exchanges, your broker provides you a document that is called contract note on every day. So, that document, I mean contract note, you will see at the last of that contract note there is a symbol affixed on it, and that symbol represent that this document is electronically signed. In case of your bank account, if you receive a bank statement, when you open this bank statement, you will find a signature of your bank manager of a branch in which your account is maintained. You will simply find that signature. Sometimes your software may not support that, but if you go through this document, you will find the digital signatures affixed on it. Electronic governance. So, legal recognition of electronic records. What does electronic governance means? Electronic governance means whatever transaction is being done or going to be done through electronic mode to provide them a legal recognition. Second, legal recognition of digital signature. डिजिटल सिग्नेचर को भी लीगली रिकॉग्नाइज किया गया है, जैसे कंपनी को लीगली रिकॉग्नाइज किया है तो डिजिटल सिग्नेचर को लीगली रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज, बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है मैंने इस वर्ड को, ध्यान दीजिएगा. Delivery of services by service provider. Whenever you receive or whenever you put a purchase order at Zomato's website, they simply issues an invoice and send it, forward it to your email along with your mobile number. That is electronic record. Whenever you buy any stuff or any product from your e-commerce retailer, they simply generate an invoice and forward it to your registered email ID. So, now all the transactions are covered through electronic mode. You can very easily see if a stock broker issues, you do any transaction at a stock exchange through a stock broker portal, they simply issue how the value of transaction you did. On the very next morning, they will issue a contract note. So, all these document, all this transaction is done, but you will not find that involvement of a paper or pen. They simply generate the document and forward it to your registered email ID or mobile number or your SMS. So, earlier when I was a student, I purchased a book on e-commerce, और उन्होंने बताया कि ऐसा बाज़ार होगा, मार्केट ऐसा होगा, ऑनलाइन मार्केट होगा, कस्टमर्स बाय करेंगे, सेल करेंगे. तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि ऐसा भी हो सकता है, कितनी लीगल टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी, पेमेंट कैसे करेंगे. मैंने भी सोचा कि हाँ चीटिंग भी बड़ी आसानी से हो सकती, लेकिन इन सारी चीज़ों को लॉ बना के किस तरीके से कवर अप कर दिया गया. देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कैसे ई रिटेलर्स को कवर अप किया गया था, IT एक्ट में सारी चीज़ों को किस तरीके से कवर अप किया गया है. ठीक. नेक्स्ट है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कितने दिनों के लिए रखे जा सकते हैं. जैसे आपको मालूम होगा अंडर कंपनीज एक्ट यू हैव टू कीप योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अप टू 8 years. दैट इज मेंशन इन द कंपनीज एक्ट. यू कैन मेंटेन योर books of account more than 8 years, but compulsory requirement is that you must maintain your books of account at least last 8 years. So, retention of electronic records, audit of documents etc. in electronic forms,
publication of rules, regulation, etc. electronic gazette, government simply publishes electronic gazette. नेक्स्ट है नो राइट टू इंसिस्ट दैट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ये बात बिल्कुल सही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही सबमिट करें, आप हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं। सपोज यू हैव टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट विद द आरओसी, यू कैन फाइल दैट द पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट with the jurisdiction of your ROC in a hard copy also. Power of central government to make rules legally on time to time basis. Central government may amend the rules and introduce clauses or sub clauses. Validity of a contract formed through an electronic means. Now in the Consumer Protection Act, we have already discussed that you can file a complaint against a seller service provider through online mode. I have provided you the link also. So whether these all these activities are valid, so under Information Technology Act, now you are aware that all these transactions are covered in legality. Attribution means affixing digital signature. How you will sign a document? With respect to AT Act 2000, attribution of electronic records means fixing identity of a sender and a receiver. In future, like you are just now you are a student, whenever you will join any organization and you have authority to sign a particular document, then you have to generate your digital signature. This is attribution means affixing digital signature. Here originator is a person who sends or generate an electronic record. Suppose you send an email to your friend, then you are originator. The receiver electronic record is termed as addressee. To whom you have sent that email is addressee. You simply send an email to your boss, you are the originator, and your boss receives that email in his inbox, he is the addressee. An electronic record shall be attributed to the originator. If suppose वो ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब ये माना जाएगा कि ओरिजिनेटर यानी कि ओरिजिनल पर्सन ने इसको जनरेट किया है. इफ इट वॉज सेंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ. सेकेंड, by a person who had the authority to act on behalf of the originator. Suppose आपने अपने जूनियर को बोल दिया कि आप मेरी ईमेल आईडी से बॉस को ये पर्टिकुलर डेटा फॉरवर्ड कर दीजिए, तो आपने कि ईमेल आईडी का इस्तेमाल करते हुए आपके सबऑर्डिनेट ने आपको बॉस को डेटा फॉरवर्ड कर दिया, तो वो भी ये माना जाएगा कि वही ओरिजिनेटर की तरफ से आया है. बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है कि किस तरीके से आपकी ईमेल आईडी या और कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीडियम का इस्तेमाल किया गया है. जैसे अक्सर देखते होंगे कि आपके सबऑर्डिनेट ने आपके बॉस को आपके मोबाइल से एसएमएस कर दिया, व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज भेज दिया, तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कवर्ड अंडर आईटी एक्ट. by an information system programmed by on behalf of the originator to operate automatically. Suppose आपको अपने मदर को अपने फादर को रात में 12 बजे हैप्पी बर्थडे बोलना है, विश करना है उनको, हैप्पी न्यू ईयर विश करना है फ्रेंड सर्किल में, तो आपने अपने ईमेल आईडी में टाइमिंग सेट कर दी. रात में जैसे ही 12 बजे बजा, गूगल ने आपके फ्रेंड या आपके एड्रेसी को मैसेज आपका फॉरवर्ड कर दिया. तो इसके बारे में बात हो रही है. बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली. एग्जाम्पल, इफ एक्स सेंड एन ईमेल टू वाई, देन एक्स इज ए सेंडर और ओरिजिनेटर एंड वाई इज रिसीवर और एड्रेसी. मैं आईटी एक्ट को पढ़ रहा हूँ तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुली पढ़ना है इसको. नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पोज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. आपके पास मैंने मेल भेजा, आपके बॉस ने आपको मेल भेजा, आपने उसको एक्नॉलेज किया, कंसेंट दी, दैट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. आप देखते होंगे ईमेल के नीचे यस आई विल फॉरवर्ड, इस तरह के आंसर आपके पास ऑप्शंस बन के आते हैं. ये उसी के बारे में बात हो रही है, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट है
where the originator has not stipulated that the electronic record shall be binding only on receipt of such acknowledgement, and the acknowledgement has not been received by the originator with the time specified or agreed, or if not time has been specified or agreed to within a reasonable time, the originator may give notice to the addressee stating that no acknowledgement has been received. ये कह रहे हैं आपने मेल भेजा, तो मेल का आप एक्नॉलेजमेंट भी एक्सपेक्टेशन उम्मीद कर रहे हैं कि आपके पास एक्नॉलेजमेंट आना चाहिए। अगर आपका उम्मीद है कि एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी हम मानेंगे सेंड हो चुकी इन्फॉर्मेशन। तो इस तरह का आपका एट्रीब्यूशन आपका सोच है। तो जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक ये एज्यूम किया जाएगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके बॉस तक नहीं पहुंची। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से पूरे स्लाइड का मतलब है, मैंने कोई समरी में इसको बताया है। नेक्स्ट है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। सिंपली आप अपने सिस्टम से डिस्प्ले मैसेज भेज रहे हैं, चाहे वेदर दैट सिस्टम इज ए कंप्यूटर, लैपटॉप और अ मोबाइल, सब कुछ कवर है। Between the originator and the addressee, the dispatch of electronic record occur when it enters computer resources outside the control of the originator। मेरे सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन निकल गई, ऐसे तो निकलेगी नहीं ऑटोमेटिकली, या तो मैंने प्रोग्राम करके रखी होगी या अपने सबऑर्डिनेट को बोला होगा या मैं खुद भेज रहा हूँगा। हम ये मानेंगे कि इन्फॉर्मेशन डिस्पैच हो गई है। नेक्स्ट है इफ़ द एड्रेसी हैज़ द डिज़ाइन, वो पूरी सीधी चीज़ें वही लिखी हैं कि कब कैसे कहाँ पे डिस्पैच होना, उसके बारे में इन लोगों ने डिस्कस किया। इस चीज़ को बड़ी आसानी से आप लोग लाइन्स के थ्रू समझ सकते हैं। ये सारी की सारी यहाँ पे आपकी डेफिनेशंस कवर हो रही हैं। लास्ट है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन पॉइंट नंबर 5, इफ़ द ओरिजिनेटर और द एड्रेसी हैज़ मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस शैल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। सपोज एक ब्रांच ऑफिस है, एक हेड ऑफिस है, तो इन्फॉर्मेशन आपने ब्रांच ऑफिस से भेजी या हेड ऑफिस पे। अगर करना अगर हेड ऑफिस पे आपने इन्फॉर्मेशन भेजी तो ये एज्यूम किया जाएगा इन्फॉर्मेशन सब जगह पहुंच चुकी है। ये सारी चीज़ों को स्पेसिफाई इन्होंने स्पेसिफिकली किया हुआ है। बीइंग ए लॉयर, अगर आपको लॉ की प्रैक्टिस करनी इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ना होगा, नहीं तो एक बीइंग ए स्टूडेंट आपके पास एक जनरल अवेयरनेस अवेलेबल है। सो दिस वॉज द क्राइटेरिया ऑफ डेफिनेशंस विच इज़ कवर्ड इन यूनिट नंबर 5. We will discuss further topic in our next lecture. Okay, thank you.